हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पलाश और आप लोगों का स्वागत है आपका चैनल वंडरलस्ट बाइट्स में। अभी हम इस अल-हुला टूर में ये जो जगह जाएंगे इसको हेग्रा बोलते हैं। ये एक बहुत हेरिटेज साइट है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो माउंटेन को काट के नेबेटियन ट्राइब्स ने बनाया है, बहुत ही खूबसूरत हेग्रा है, टॉम्स है। ये सब देखने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अभी हम हेग्रा जा रहे हैं। ये अल-हुला सिटी के अंदर ही है। एक जगह है जो मदन-इन सालेह भी बोलते हैं इसको। ये जगह जो है दोस्तों, इसमें बहुत सारे टॉम्स हैं। ये नैबेटियन बोल के एक नैबेटियन ट्राइब था पहले। तो उस ट्राइब ने ये यहाँ पे जो पहाड़ हैं वो पहाड़ को उनको काट के उन्होंने अपना जगह बनाया था और उसमें वो लोग वहाँ पे लोग रहते थे। और वहाँ पे जब कोई मर जाता था, मरने के बाद उनके जो पार्थिव शरीर है उसको उसके अंदर डालते थे और उसको रखते थे। तो ये उनका कल्चर, सिविलाइजेशन, वो नैबेटियन सिविलाइजेशन के टाइम पे ये बना हुआ है। तो ये सिविलाइजेशन को हम देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों ये ट्रिप हम लोगों ने बुक किया है सेपरेटली। हम दो फैमिली गए हैं, तो हम दोनों दो फैमिली मिलके ये ट्रिप लिया है हम लोगों ने। इसमें हम लोगों को एक लैंड क्रूज़र गाड़ी मिला है और इसके साथ एक गाइड भी मिला है जो गाइड हम लोगों को पूरा ये चीज़ दिखा के यहाँ पे पूरा सैर कराएंगे और वो पूरा इस चीज़ के बारे में, यहाँ के सिविलाइजेशन और हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए दोस्तों देखते रहिए पूरा वीडियो को, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है और बहुत सारा जानकारी मिलने वाला है इस वीडियो में। दोस्तों अभी देखिए हम अंदर आ गए हैं। अभी हम ये लैंड क्रूज़र गाड़ी में जा रहे हैं। ये दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं, ये जैसे अभी एक जो गया टॉम, इसके अंदर अपने नीचे देखा होगा एक गेट की तरह था। तो ये है, ये एक टॉम है। और जो दूर दिख रहा है, जो पहाड़ियाँ दिख रहा है ना, ये सब अलग अलग सब हैं। पूरा टॉम है। ये पूरा एरिया को बोला जाता है हेग्रा और इसके अंदर बहुत सारे टॉम है। जिस टॉम को इन्होंने बनाया था, ये नैबेटियन ट्राइब्स ने बनाया था। इसके अंदर देखिए दोस्तों कच्चा रोड है। इस कच्चे रोड से हम जा रहे हैं। अभी बहुत धूप है तो हम छाता भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये इसके ऊपर कोई शेड नहीं है, ये ओपन जीप है। तो इसीलिए हम इससे छतरी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर पूरा सेक्शन अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। आप देख सकते हो, कुछ पिलर्स देख सकते हो छोटे छोटे। ये सब मार्किंग किया हुआ है कौन सा टॉम क्या है और नाम भी दिया गया है इन टॉम का। ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है सब। दोस्तों अभी हम फर्स्ट जहाँ से शुरुआत करेंगे, जो टॉम देखेंगे वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ से पहुँचने के बाद यहाँ से स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे ये पूरा एरिया का जो जितने भी टॉम्स हैं हम देखेंगे एक एक करके। ये हम हेग्रा अभी जा रहे हैं। ये हेग्रा एक ट्राइब का बनाया हुआ है। ये देखिए पहाड़ों को काट के इन्होंने किस तरह से बनाया है, कितना खूबसूरत है ये नज़ारा आप देख सकते हो। हम लोग ऑन द वे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये हेगरा हेरिटेज साइट पे हैं हम लोग अभी। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है। This is our guide. He is our guide. This Saudi guy. Years, months, eventually nobody knows exactly how many years they took it, but they finished it until over there. The bottoms here they didn't finish at all, and they took it because of sandstone from the time. Normally 3 or 4 sculptures they can carve it. Right. Some influential Egyptians, Greeks, Romans, Mesopotamian, other cultures. So most of them they learn from the architecture. This one has a name. Can you see the squares? It says Lihyan, son of Kuz. This guy, he's the owner of this tomb. What language is that? The Nabateans. Aramaic. Okay. Aramaic, which is one of those Semitic language, or the central Semitic language. Right. And this is only his name. There's no any information about what time or what whole building or someone. Just his name by the owner. Now this one they finished only 9%. Why? If you notice something on the corner, you will see there's a line between the smooth and the fiction of the chisels. They suddenly stopped here. The other thing is the rocks in here. They supposed to be removed by the people they call themselves the masons. Right. The number 3, the 2 blocks over there, they didn't remove it. Now they estimated about 2,000 years old. All right. Okay, this is by the Nabatean civilization. Right. No inside or nothing much detail, just simply whole at all. They didn't complete the inside as well. So is this limestone like the way you have in Petra? Yes, exactly. Limestone? Exactly the same, but the difference is the landscape. In Petra, they have like a valley, but this area... not open like the one you have here. I've been to Petra. Oh, yes. So I've seen the tomb, the treasury, and the monastery. I've seen it all. Yes, we have here also, but it's not like it's one thing, because they spend most of the time building their own ancient Nabatean in Petra. Right. But they come in here exactly 200 BC, and they continue to rule until around 106 AD, and the Romans they come here, they end their rule. Ah, okay, great. So that's why there's something unfinished from here. Yeah, and the landscape is. ये हम लोग हेगरा के एक पॉइंट पे हैं, जैसा कि आप लोग को अभी डिस्क्राइब किया आदिल ने, हमारे गाइड। वैसे आप देख रहे हैं ये चारों तरफ का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये है मेन हेगरा का। वो जो जगह आप देख रहे हो वो एक पिक पॉइंट है, वहाँ से हम लोग को पिक किया जा रहा है और हम लोग को ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे खजूर और कुछ खाने का, मतलब जैसे डेट्स हो गया, खजूर और उसके साथ साथ कॉफ़ी, ये सब मौजूद है। तो कोई भी विज़िटर आ रहे हैं तो वहाँ पे वो उनको दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये नज़ारा देखिए, ये सामने का कितना अच्छा बनाया हुआ है। नेचर का कितना अच्छा क्रिएशन देखिए। ये सामने वाला जो लैंड क्रूज़र देख रहे हैं ये हम लोगों का है। ये हम लोगों को ड्राइवर के साथ गाइड है। ये जो 2 सऊदी जा रहे हैं आगे तोप पहन के, ये हमारे गाइड हैं, एक ड्राइवर हैं। ये दोनों हम लोगों को लेके जाएंगे अभी दूसरे पॉइंट पे। आगे हम लोग आपको दिखा रहे हैं दूसरे पॉइंट का।
ये नज़ारा देखिए दोस्तों, ये बस जो खड़ा है ये दूसरे विजिटर के लिए जो नॉर्मल हम लोग ये स्पेशल लैंड क्रूज़र, ये जो गाड़ी खड़ा है ये हम लोगों ने लिया है आखिर वाला। ये चारों तरफ का नज़ारा देखिए, और एक हेगरा है ये देखिए, ये देखिए सामने जो गुफा की तरह दिख रहा है ना, दरवाज़ा है वो अंदर जाने के लिए। मैं आप लोगों को वहाँ के पास लेके जा रहा हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत, ये जो मैं जा रहा हूँ, ये जो गुफा दिख रहा है ना आपको, गुफा के जैसा, ये लोग ये ट्राइब बनाए थे यहाँ पे। इसको कितना अच्छा खूबसूरत सजा के ये हिल के जैसे इस जगह को, अलग अलग पहाड़ के जैसे ये जगह को उन्होंने काट के ये बनाया है। वो कितना खूबसूरत, और इसके अंदर वो लोग रहते थे। तो देखिए ये कितना खूबसूरत है, ये देखिए। Call it Jabal al-Barat. Okay. This is about huge tombs representing their Nabateans. This is a huge mountain, like surrounded by tombs, like 31 tombs. In this one? In this wow. one. This facility is only they completed. Now they will destroy. Video they bana. demonstrated how about the Video names from here. Okay. So, and if you notice something, they're able to finish from here. There's faces from here. They put in some mask. This one called Demon's Mask from here. They found some mythology from the Greeks and Romans from here. Okay. This is a demon mask. Really? This one they're representing called Medusa. Mendoza, the one you look at her and you turn into stone, right? Exactly. Oh wow. And the Like description. And description. Right. There's a lot of detail. Talk about the names of the families and Oh, very wow. strict rule to protecting the tomb or not enter the tomb without documentation. Oh wow. Otherwise, they have to be cursed or get pay for cursed by the own goddess, or pay for their own masters and the priests. How deep is this tomb? So you can go inside? Well, this is you can see from here. This is has not that deep. Some other tombs they make a rooms, so they make a holes to put some bodies. But this one nothing much detail. This is only from the inside. Now you notice the roses. This one is the Nabatean roses. Nabatean roses. Nabatean roses. Roses. This one grows up in the Nabateans. This one symbolizes of the Nabateans' life of eternity. Okay. Now I didn't mention the crow steps. The crow steps, by the way, it means a stairway to heaven, or it's decent to their own God to shut up. Got it. Okay. Okay. Did you ever figure out the purpose of this tomb? Why did they make such tombs? Well, because they believe this mountain is very important to them. This is like a very, how do you say, religious thing to them. Right. So they carve it. They believe that this rock will turn to their soil by this eagle, which is representing their goddess called the Shah. Something to do with afterlife? Yes, exactly. Okay. We found some bodies and we found some jewelries and food. They put it inside here, like Egyptians. For the dead? For the dead. Okay, okay. From the latest excavation back from this okay. 20 years ago. Great. So some of the damaged sites, 100 years ago, there's bullet holes in here. You notice? Why is that? Probably, Bedouins or that Some time. fight between those... 1930s, 1940s, okay. something like happened in this area, because this area used to be a trade road back in the time, and there's a war, and then from here. Right. Details. Now the inscription talk about their own positions, on their own occupations. So the Nabateans, they have different classes: the king and the administrations, commanders, military commanders. Right. This one is the divine himself. His name is Kahlan, the doctor. Okay. Kahlan, the doctor, son of wife, and his wife and generation, no very rent or buy for the documents of the Nabateans, and mention the king during King Eritrea. King Eritrea called himself King Labayisbi. And they
mention the sculptures and mention if somebody bring documents, bringing to a priest 3,000 coins. Oh, great, great. Kind of like that. No, the difference, instead of women's, there's a guy actually. This one another divimas. This one they call it. Really? Yes. I want to ask you something. You know, in Petra, you have a lot of stone openings where they carved into, or maybe natural. They used to live in those. You've been to Petra, right? Yeah. So you see the mountain nearby treasury has a lot of big voids inside. Yes. Well, actually, What is that? this is actually. You have it here? Well, it used to be here 1,000 years ago, which is over there. Now it's Really? disappeared. Here. I think they used to live there. Let me show you something. Which is Really? I have the files first thing. दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।